Students, I welcome all of you to this video. In this video, we will study about the poem of class 12th on his blindness by John Milton. This poem on his blindness is a personal sonnet. In this poem, in this sonnet, poet tells us about his own problems, about his own sorrow, because he had got blind at the age of 44. Sonnet is sonnet एक प्रकार की पोएम है. in a sonnet there are 14 lines. हालांकि सॉनेट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, और इटालियन सॉनेट एंड शेक्सपियरियन सॉनेट. ये सॉनेट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह एक इटालियन सॉनेट है. और इटालियन सॉनेट की जो विशेषता है वो ये है कि दिस सॉनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. फर्स्ट section is of 8 lines and second section is of 6 lines. The first section, which is of 8 lines, जो 8 लाइन का जो पहला भाग है उसे ऑक्टेव, और जो दूसरा भाग है ऑफ 6 लाइन्स उसे सेस्टेट कहा जाता है. फर्स्ट पार्ट में यानी ऑक्टेव में the poet describes his problems, his sorrow, his worries, and he asks questions, he complains against somebody. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक सॉनेट की, कि फर्स्ट पार्ट में सॉनेट के फर्स्ट पार्ट में, इटालियन सॉनेट के फर्स्ट पार्ट में पोएट यानी ऑक्टेव में पोएट अपना दुख व्यक्त करता है और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो कंप्लेन करता है अगेंस्ट समबडी. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पार्ट में पाई जाती है. और सेकंड पार्ट जो स्टेट है, वहाँ पर पोएट गेट्स सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स, गेट्स आंसर टू हिज क्वेश्चंस. आइए अब देखते हैं पोएम की लाइन्स, एक्चुअल पोएम. When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact deliver light denied? I fondly ask, but patience to prevent. ये जो फर्स्ट पार्ट है 8 लाइन्स का, यहाँ पर पोएट अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सारों और को व्यक्त करता है. देखिएगा, व्हेन आई कंसीडर, पोएट सेज, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, व्हेन आई थिंक हाउ माई लाइट इज स्पेंट, द वे आई बिकेम ब्लाइंड. माई लाइट इज स्पेंट मीन्स आई बिकेम ब्लाइंड. Poet says, when I think about my blindness, and half my days, means before the half of my days, my life, in this dark world and wide, in this dark world and wide, here, in this dark world, this world is full of darkness and it is very big. And that one talent which is death to hide. When poet became blind, he was very unhappy, he was full of sorrow, because this world was now full of darkness for him, and he was now not able to reach different places where he wanted to go. And this happened before the half of his life. And that one talent which is death to hide. And here the third line shows that the poet is a religious person.
he believes in God, and he also believes whatever happens in this world is done by God. And that one talent, this was the belief of the poet, that God has given a talent to everyone which must be used, and if it is not used, God will punish them. This was the main reason of his problems, his sorrow. ये पोएट के दुख का सबसे बड़ा कारण था कि वो टैलेंट जो उसके पास है, जो गॉड ने उसे दिया है, विल नॉट बी यूज्ड, अब वो प्रयोग में नहीं आएगी, बिकॉज ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, एंड नॉट यूजिंग द टैलेंट इज इक्वल टू डेथ. पोएट सेज, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वह एक टैलेंट विच गॉड हैज़ गिवन, और जिसे यूज़ न करना, नॉट यूजिंग विच इज़ इक्वल टू डेथ, मौत के बराबर है. लाज विद मी यूजलेस, वो मेरे साथ, मेरे पास व्यर्थ में पड़ी है. लॉज्ड मीन्स प्लेस्ड, विद मी यूजलेस. दिस टैलेंट इज प्लेस्ड विद मी एंड इट इज़ यूजलेस बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड, दो माई सोल मूवमेंट. यद्यपि माई सोल, my soul means I want to use it. I want to use it. My soul is ready to use this talent to serve therewith my Maker, to serve therewith. Therewith means with the talent. My soul is ready to use this talent given by God, to use it in the service of Him, in the service of my Maker, my God, and present my true account. I also want to present my true account. I want to tell God everything, how I used the talent and how I developed the quantity and number of it. Lest he returning child. Lest means taki on return, when everybody goes back to God one day, and when the poet will go back to God after death, he will not be punished by him. This is the motive of the poet. और इसीलिए पोएट, ताकि उसे लौटने पर गॉड दंडित ना करे, इसलिए वो टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहता है और उससे गॉड की सेवा करना चाहता है. Does God exact to deliver light denied? This is a question which is haunting, which is coming again and again in the mind of the poet. Does God exact to deliver light denied? Does is old English, इसका मतलब है does. God exact, exact का मतलब demand या hope. Deliver, labor throughout the day, hard labor, light denied. क्या God मुझे अंधा बनाने के बाद भी मुझसे कठिन परिश्रम की उम्मीद करता है? Does God want, does God hope, does God demand hard labor from me after making me blind? This is the question which was haunting the poet's mind, which was coming again and again in the mind of the poet. I fondly ask, but says, I was asking this question to myself like a fool. And suddenly the poet's patience stood up and stopped this asking of question by his mind. The question stopped, and now the poet's patience stood up and answered his questions and relieved him from the pain that he was suffering. And replies this question: God does not need either man's work as his own gift. And the poet's patience tells the poet, पोएट का जो पेशेंस है वो अब पोएट को ये बताता है, God does not need either man's work or his own gift. God does not need anything from man, neither the man's work nor the gift he has given to man.
पोएट का पेशेंस उसे बताता है कि गॉड मैन से कुछ भी नहीं चाहता, न तो वो उपहार जो उसने उसे दिया है और न ही कोई परिश्रम उससे, मैन से। God does not need anything from man who best bear his mild yoke। जो लोग अच्छी तरह से बेस्ट वे bear his mild yoke means light punishment, they serve him best। The people who bear the light punishment given by God silently and do not complain, they are the best servants of God। These words, these sentences are being spoken by the poet's patience। His state is kingly। His state is kingly। The state of God is like a king's state। God is like a powerful king। Thousands at his bidding speed। Thousands of servants run fast when God gives out an order। जब गॉड आदेश देता है तो हजारों की संख्या में सर्वेंट उसके आदेश का पालन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और गॉड एक पावरफुल किंग की तरह होता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स आर एट हिज सर्विस। और उसकी सेवा में हजारों की संख्या में सर्वेंट होते हैं। एंड दे आर स्पेशल सर्वेंट्स and post over land and ocean without rest। These servants of God are special servants। They run equally fast on land and water। ये ऐसे सर्वेंट्स हैं गॉड के जो बहुत ही स्पेशल सर्वेंट्स हैं, और ये धरती पर और समुद्र में और एयर में जहाँ कहीं भी आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, ये इक्वल स्पीड से और इक्वल क्षमता से हर जगह पहुंच सकते हैं। और दे डू नॉट नीड रेस्ट। और उन्हें आराम की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और वे भी भगवान के अच्छे सेवक हैं जो कंप्लेन नहीं करते, डू नॉट कंप्लेन, और दे ओनली स्टैंड एंड वेट। वे खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब भी मौका लगेगा हम गॉड की सेवा कर जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम।